And now the time has come that instead of my presentation, instead of giving it tomorrow, I should give it today, because tomorrow there are four speakers, and today we could not get two speakers, they were busy. And so I think I must uh, give my presentation. And my topic that I selected, it was the scientific, the science behind the Saptapadi. In fact, in the marriage system, the bride and bridegroom, they are required to walk 7 steps. Why 7 steps? Why not one step? Why not 2 steps? Why not 3, 5 steps? Only 7 steps. What was the necessity? So the question is, because these rituals which are involved into various sanskaras, they have certain points or certain things to be adhered to. That is why the all such rituals have been prescribed. So in Kalidasa's Abhijnana Shakuntala, in Kumara Sambhava also, when Shiva and Parvati meets, Kalidasa writes that Satam Sangatam Saptapadina Uchyate. The Shiva tells Parvati that the company of good persons, that is materialized when they walk 7 steps. So that is why in marriage sanskar also, in Vivaha sanskar also, the husband, the would-be husband and wife, they are required to walk 7 steps. Sometimes some people, they just tell them to walk 7 steps, and sometimes they take 7 rounds of the fireplace. So it is the same thing. But the question is, why 7 steps and why not less or more? I just want to tell that this whole system, this marriage system, because two persons are meeting, and this meeting of husband and wife, it has been represented by the meeting of the sun and earth in the cosmic system. In fact, the Vedic system or Vedas, whatever they say based upon the cosmic system itself. Because in cosmos, and you might have heard that in Vedas, two words are very much popular: Dyava Prithvi, Rudasi. So Dyava Prithvi means earth and the sun. Rudasi also earth and sun. So in our solar system, this earth and sun, in a in entire 1 year, they meet at 7 places. So in a short, we can say that they walk 7 steps. And because they walk 7 steps at the cosmic level, so at the human level also, in mundane level, when this uh, marriage ceremony is solemnized, the husband and wife, they are asked to walk 7 steps. Now I would like to illustrate it by some PowerPoint so that you may be able to understand, because this is a very difficult thing to understand. So I'll show you some slides for just to make my point more clear on this aspect. So okay, you just see how the sun and earth walk 7 steps together. This is the earth. Earth rotates around its own axis, and it rotates around it revolves around the sun also. So these are the two movements of the earth. So when the earth revolves around the sun, what happens? The sun is perpendicular over earth at 7 points, and at different times. On December 21st, the sun is perpendicular on earth at the Tropic of Capricorn, that is known as Makara Rekha. And this Tropic of Capricorn, and this is also known as Makara Sankranti. Makara Sankranti
on 21st December. And today we are celebrating Makar Sankranti on 14th January. And this 14th January Makar Sankranti is not the astronomical exact position of the planets are not in Makar Rashi, but it is 23.5 degree behind. It happened some 1700 years ago, but the present position, if we calculate, that is known as Sayan Ganna, and that is a Nirayan calculation. If we go by Sayan calculation, on December 21st, Sun and Earth, Sun is perpendicular on Earth at this point. I have written it Gayatri Chanda. Ved says this as Chandas, 23.5 degree south. That is known as Gayatri Chand, and that is also known as line of Capricorn. And in January 21st, Sun comes to 20 degree south of equator, and this is known as Ushanik Chanda. These are the 7 chandas. And on 12th, on 18th Feb, the sun comes to the earth, comes perpendicular on earth at 12 degree south of the equator. And this is known as Anushtup Chanda. During March 21st, that is known as the vernal equinox, the sun is perpendicular on the equator, and this is known as Vrihati Chanda. And after March, in April 20th, sun comes perpendicular on earth at 12 degree north of equator, and that is known as Pankti Chanda. And in May 21st, sun comes perpendicular on earth to the 20 degree north of equator, and that is known as Trishtup Chanda. And on June 21st, which is known as the Yoga Day, Yoga Divas, International Yoga Day, sun comes perpendicular on earth at the Tropic of Cancer, Karka Rekha, that is 23.5 degree north of equator, and this is known as Jagati Chanda. And you know, the secret of chandas, all the chandas is also lying here. Gayatri Chanda, everybody, all Vedic scholars know that Gayatri Chanda has 24 syllables. उसमें 24 अक्षर होते हैं. Why 24 syllables? Because this Gayatri Chanda materializes when sun is at the line of Capricorn, and this line of Capricorn means 23.5 degree south of equator. So you in syllables you can't count a half syllable. So generally this 23.5 means 24. So Gayatri Chanda has 24 syllables. And similarly, this Jagati Chanda is 23.5 degree north of equator. So Jagati Chanda, 23.5 down south and 23.5 north side. So these two makes 48 degrees. With 48. So Jagati Chanda has 48 syllables. And in between chandas, if you just increase them by 4, Ushanik will have 28, Anushtup will have 32, Brihati will have 36, Pankti will have 40, Trishtu 44 syllables, and Jagati will have 48 syllables. So this is the mystery of the chandas also. And we know in Vedas also, there is a mantra in Veda, and the mantra says, Suryo Brihatim Adyudha Surya Stapati. When the sun is riding on Brihati Chanda, it gives a very, that makes a hot season. It radiates very heat. So much of heat it radiates when it rides the Brihati Chanda. Why? When the sun is on equator, we know then a lot of heat
the summer season takes place, because the sun is on Brihati Chanda. So generally the scholars, they don't understand that Brihati here is a Chanda, and they sometimes speculate why it has been said that Brihatim Adyudha Suryas Tapati. So these are the 7 steps. First, we'll start from here. If I start from, I have given one by one. This is the Tropic of Capricorn, that is known as Gayatri Chanda, 23.5 degree. Then 20 degree south of equator, and this by this time this is known as Kumbha, Kumbha Sankranti. Then 12 degree south of equator, that is known as Meena Sankranti. Then 0 degree means your this equator, and this is known as Mesha Sankranti. Similarly, after that we have this just a minute, 12 degree north, that is known as Vrishabha Sankranti. Then 20 degrees north, that is known as Mithuna Sankranti. And lastly, this is 23.5 degree north, known as Karaka Sankranti. So these are the 7 steps where earth and sun walk together, and these are also known as 7 chandas. In Yajurved, we have a mantra, Gayatrena tva chandasa parigrinhami, Trashtubhena tva chandasa parigrinhami, Jagatena tva chandasa parigrinhami. So all these mantras, they are just pointing out to this Jagati Chandha, Trishtup Chandha, and Gayatri Chandha. And similarly, when this earth revolves around the sun, all these 7 chandas I have just shown here. And there is a very good story, a very beautiful story in Brahman Granthas also. And one of the stories says, Yavade Vaisha Vishnu Rabhishete Tavad Vo Dadmaha. There was a fight between Asuras and the Suras. And Asuras, they occupied the whole of the earth. But then Suras, they started fighting. Then Asuras says, okay, we'll give you that much portion of the earth where the Vishnu will sleep. Only that much is yours, but rest is ours. So what is this Asura and Sura? Asura means the darkness, and Sur means the light, where the lighted part of the earth, that is known as Suralok, and that light starts coming from the east direction, from the direction of the east. So what happened? The story further says, it says that Yajjam eva Vishnu, Yajjo vai Vishnu, times and again in Brahman Granthas, it has been repeatedly said that Yajja is Vishnu. Why the Yajja is Vishnu? Because why the Yajja is taking place? Yajja on the earth takes place when the rays of the sun, they fall on the earth. Then only the creation on earth takes place. And this whole process, in this whole process, the Brahman Grantha, the Shatpat Brahman says, Etavati vai prithvi yavati vedi. The parameter of the earth, not the parameter of the altar, fire altar, or Yajvedi, is equal to the whole earth itself. According to the Shatpat Brahman, this whole earth is the Vedi, and the sun rays, they are falling on it, then the creation is taking place. So what is the place of Vishnu? Because Vishnu is the sun. So the place of Vishnu on the earth, the sun is sunlight, the sun rays, or the sun is perpendicular on earth between 23 degree south to 20 and south of equator to the 23.5 degree north of equator. So only that place, only this place between Jagati and Gayatri Chandha, this place is the place of Vishnu.
And that is why the Asuras says, will give you the portion of the earth where the Vishnu will sleep. So this portion, this is known as Deva portion, and other lokas, other portions, they are known as the Asura portions. So this much of the region, it has been occupied by the Devas or the sunlights. This is the share of Devas, I say, 23 point half to 23 point south, and there here the Vishnu sleeps, Vishnu's sleeping place on the earth. And this is also known in Brahmana Granthas as a Kurukshetra region, because where the sunlight is there, there only you can do work, and where the darkness is there, you can't do anything. And this is how the importance of Uttarayana and Dakshinayana is there. You know, why we celebrate, why the Uttarayan period is considered as the best period? Because when sun comes at 23.5 degree south of equator, then the earth's, the northern hemisphere of earth, it starts exposing towards the sun. So Dakshinayana is the Uttarayana of the people living in the northern hemisphere, and Uttarayana is the Uttarayana of the people living in the northern hemisphere of the earth. So both hemisphere of the earth, for southern hemisphere people, the Dakshinayana is their Uttarayan. But for the northern people, the Uttarayan is their Uttarayan, and that is why the Gayatri Chanda itself does say, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Here the eulogy is done to the sun itself, because the sun has been eulogized. The rays of the sun, when the sun shines, and when the sun rises to the northern hemisphere of the earth, then only the Uttarayan is celebrated. Why? Because we people, we Indian, we Hindus, we Vedic people, we discovered all these phenomena, and we were towards the north of the equator. There was a time when India was to the south of equator also. Then we used to call Dakshinayan as our Uttarayan, and the year also used to be started from Dakshinayan. But slowly and steadily, by through this plate tectonic activities, these geological activities tell us that this Indian part of earth, this is going to shifting towards north. And there was a time when we were on the equator, and now we have shifted to above the equator, and this line of Cancer is passing through the India. So this is how the importance of Uttarayan and Dakshinayan has been variously been described in the Vedas. And this is how, because the sun and earth walk 7 steps together, so we, in our marriage system also, we are celebrating, or this ritual of Saptapadi has been introduced. So I think this is the brief description I wanted to give you, because our festivals, जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो बिल्कुल विज्ञान के अनुरूप हैं. जिस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य 7 कदम चलते हैं 7 डिफरेंट समय में पूरे वर्ष में, उसी प्रकार से विवाह का जो संस्कार होता है, उसमें पति और पत्नी को भी 7 कदम चलने के लिए कहा जाता है. और यही जो कालिदास हैं वो भी कहते हैं, सताम सप संगतम साप्तपदीनम उच्यते. तो वही 7 कदमों से ही जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनकी संगति हो जाती है. तो सबसे पहला कदम मैंने बताया गायत्री छंद का, जो कि 21 दिसंबर को बनता है, जिसको हम उत्तरायण भी कहते हैं और मकर संक्रांति भी कहते हैं. दूसरा कदम जो होता है वो 20 डिग्री साउथ में होता है, जो कि 21 जनवरी को होता है. तीसरा कदम पृथ्वी और सूर्य का जो एक साथ होता है, वो 12 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में, दक्षिण में होता है, और जो कि 18 फरवरी को बनता है. और यही जो जितनी भी जो संक्रांतियां हैं सूर्य की,
इन्हीं के आधार पर सोलर वर्ष भी प्राचीन काल में वैदिक समय में निर्धारित किया जाता था। और ये जो इक्वेटर है इसको हम वसंत संपात बोलते हैं, और ये 21 मार्च को होता है। तो ये जो है बृहति छंद इसको कहा गया है। और इक्वेटर से ऊपर जब 12 डिग्री ऊपर चलते हैं हम, तो उसको जो वहां भी सूर्य का एक कदम है, फिर 20 डिग्री पर है, और अंत में जो है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो आप देखिए सूर्य सिद्धांत जो है वो 23.5 डिग्री नहीं कहता है, सूर्य सिद्धांत कर्क रेखा को 24 डिग्री, और उसी प्रकार से जो मकर रेखा है उसको भी 24 डिग्री इक्वेटर से बताता है। तो आप देखिए 24 और 24 दोनों मिलके 48 डिग्री हो जाते हैं। इसलिए जो जगती छंद है उसमें 48 अक्षर होते हैं। और क्योंकि जो गायत्री छंद है वो 23.5 डिग्री है, तो उस गायत्री छंद में हम 24 अक्षर रखते हैं, और बीच के जो 5 छंद हैं उसमें 4-4 की आप इंक्रीज करते हैं, तो 24 से 28, 32, 36, 40, 44 और 48, इस प्रकार से वेदों के जो 7 प्रमुख छंद हैं उनका ये क्रम है। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो वेदों की प्लानिंग है, जो वेदों की छंदो योजना है, वो भी बिल्कुल कॉस्मिक योजना है। जो हमारे सौर मंडल की योजना है उसी के आधार पर वेदों की योजना भी है। और एक वेद का मंत्र भी मैंने कोट किया था कि वृहतिम वृहतिम अद्यूढ़ सूर्यस्तपति, जब जो सूर्य है वृहति छंद पर स्वार होता है तो वो भयंकर रूप से तपने लगता है। तो ये जो वृहति छंद भूमध्य रेखा है, और इस पे जब सूर्य आता है तो अत्यधिक आतप फैलाता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उष्णता जो है उस समय पृथ्वी पर होती है। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं आधिदैविक। 4 प्रकार का हमारे यहाँ सिस्टम है, आध्यात्मिक, आधिदैविक एंड आदि भौतिक। सो द एंटायर प्लानिंग ऑफ द वेदास और वैदिक सिस्टम इज बेस्ड अपॉन आइदर आध्यात्मिक सिस्टम और आधिदैविक सिस्टम। आधिदैविक मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल, और आधिभौतिक means mundane worldly system. So the whole system has been prescribed, and I think all rituals, different rituals in our sanskaras, they have some certain scientific values behind them, either spiritual values behind them. So I think I'm going to sum up it now, and if you want to ask any question either from Nand Kumarji regarding his lecture or my presentation, we are happy to. We have 2 persons that raised their hands. First is Sudhir Velani. Yeah. Yes, Sudhir Velani ji. नमस्ते सुधीर जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से हूँ। Yes, और yes. मेरा प्रश्न डॉक्टर रवि जी आपसे है कि आपकी जब मैं स्लाइड देख रहा था तभी छंदों के नाम के पास कुछ और भी शब्द लगे हुए थे, जैसे गायत्री के पास पितर लगा हुआ था। साइंस ऑफ छंदाज एक बहुत बड़ा मेरा प्रेजेंटेशन है, उसमें से मैंने कुछ दिखाया था। ठीक ठीक, वो अलग से आपसे वो बात की जा सकती है। साइंस ऑफ वैदिक मीटर्स एंड म्यूजिकल नोट्स, ये जो 7 स्वर है ना, जिसको सारे गामा पा धानी बोलते हैं, षडज निचरित गांधार, इनका भी एक विज्ञान है। तो एक्चुअली ये सारा का सारा उसका एक प्रेजेंटेशन था जी। उसके पास आपने पितर वगैरह कुछ शब्द लिखे हैं, उसके बारे में आपने बिल्कुल उल्लेख नहीं किया। बता देता हूँ। अब ये जो है 2 और है, उसमें 2 और चीजें हैं। जैसे आपने उत्तरायण और दक्षिणायन सुना, ऐसा ही 2 यान है, देवयान और पितृयान। देवयान क्या है और पितृयान क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जब देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण में जब सूर्य होता है और वो 23.5 डिग्री उत्तर में जाता है, तो ये पूरे जो 6 मास का समय है इसको हम उत्तरायण बोलते हैं। परंतु जब सूर्य मध्य रेखा पर होता ना, भूमध्य रेखा पर होता, इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री पे 21 मार्च को, और फिर वो 21 मार्च से 21 जून तक नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में गया, और फिर 21 जून से 23 सितंबर तक पुनः इक्वेटर पे आ गया। तो ये जो पीरियड है 6 महीने का, 21 मार्च से 23 सितंबर तक, इसको हम देवयान बोलते हैं। दूसरी तरफ 23 सितंबर के बाद जब सूर्य डाउन साउथ आने लगेगा और 21 दिसंबर को एक्सट्रीम डाउन साउथ में आ जाएगा, और 21 दिसंबर के बाद पुनः 21 मार्च तक फिर वो इक्वेटर पे चला जाएगा, तो
23 सितंबर से 21 मार्च का ये जो 6 मंथ का पीरियड है, दैट इज नोन एज पितृयान। और दूसरे, जब पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थ इज on 23.5 degree, Earth's this what you call it, जो आपने धुरी पे झुकना है, inclination is there. Earth has inclined on its axis 23.5 degree. तो ये जो सारा है, इसी पे सूर्य आता है। परंतु जो चंद्रमा है ना, वो उसका इंक्लिनेशन है 28 डिग्री, 28.5 डिग्री। तो जो 23.5 डिग्री से आगे 5 डिग्री है, वो चंद्रमा का क्षेत्र है पूरी पृथ्वी पर। उसको बोलते हैं चंद्र पृष्ठे। जो बार बार हमारे जो ग्रंथ है ना, एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ हैं, एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ हैं, we find lot of mention that this is chandra prishta, this is the surface of moon. So what is the surface of moon represented on earth is between 23.5 degree north to 28.5 degree north. So 23.5 से जो 28 डिग्री हाफ का जो बीच का पोर्शन है, वो चंद्र पृष्ठ है पृथ्वी पर, क्योंकि वहां पर केवल चंद्रमा ही पृथ्वी के परपेंडिकुलर आता है, सूर्य नहीं आता है। और ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको देवलोक भी कहा, नॉर्थ पोल को देवलोक कहा है। और इसी को हमारे पुराणों में सुमेरु कहा है, सुमेरु। और जो साउथ पोल है, दैट इज कॉल्ड इन पुराणाज एज कुमेरु, और उसको दानवलोक भी कहा है। in Taittiriya Samhita we find a mantra and it says the year of human beings is equivalent to a day of devas, a day of Danavas. How it happens? Because at polar regions, the day and night, they are equal to 6 months day and night. Yes. 1 day of polar regions, that is equal to 1 day of human beings. And these equatorial regions, they are known as human region on the earth. So, because the maximum human population, you will find around the equatorial regions. So that is why this region, this particular region where Vishnu sleeps, that is the human region, that is Manushya Loka, and those are the Devaloka, Danavaloka. So Dev and Danavas, they were not some good or bad persons, but these were the geographical or geological boundaries, you can say. Similarly, the eastern direction, that was known as Suraloka, and western direction, that was known as Asuraloka. In Surya Siddhanta very clearly says, it says that when there is a light or daylight in the region of Suras, the Asura region remains darkened. Because when there is a sun in the Purva, in Vedic system, it's very scientific. Even the names, they are very scientific. Because the sun rises in the east, so we call it Purva Disha, means first direction. And it sets in the west, so we call that Paschim. Paschim means later, Baad Wali Disha. So everything is very scientific here. So Purva Disha and Paschim Disha. So this Surya region, this you can say this eastern portion of the earth, that is known as Surya region, and western portion of the earth, that is known as Asura region. And one more thing for your information's sake, this prime meridian, present day prime meridian passes through Greenwich, but during Vedic period, it used to pass through Ujjain, Kurukshetra, and my place Rohtak. And it was called by that time Lanka. This 0 degree longitude you call, or prime meridian, it used to be called Lanka during Vedic period. And Ravana's city, it was not, the name of the city was not Lanka, but that city, that place was situated on Lanka. So it used to be called as Lanka because it was situated on 0 degree meridian, prime meridian. And the areas
to the east of prime meridian, they were known as the Sur region. And in later period, the Kshatriyas who were living to the eastern side of the prime meridian, they used to be called as that this is the solar dynasty, because that is the region of sun, Surya Vanshi. Ayodhya is located to the east of the prime meridian. So Ayodhya, Ram was Surya Vanshi. But these Pandavas, this Delhi, Indraprastha, it is located to the west of the prime meridian, our Vedic prime meridian, not this prime meridian. So the Pandavas, they used to be called as Chandravanshi, lunar dynasty, and the whole globe. The habitation on the whole globe has been divided into these classes. You might have heard the Hamitic races, Semitic races. Semitic races means the Indian Kshatriyas who went out of India and habitated different parts of the globe. They from the western part of India, they were known as Semitic races. They formed the Semitic races. And the Indians who went from the eastern part of this prime meridian, and they formed the races, Hamitic races. He means sun, and so means this moon. Chandrama. So Hamitic races, Semitic races. Similarly, if you have studied linguistics, in linguistics also there are two classes of languages: Semitic languages and Hamitic languages. So the entire globe is the representation of the Vedic India. Nothing is different from what our Vedic seers have described it. And one more thing, okay, some time is there. Let me tell you one more good fact. I think you will be happy. We might have heard the story of the Samudra Manthan, ocean turning. Everybody has heard. It's a very popular story of the Puranas, and the Western scholars say, and all these Indian great scientists say that this is a mythical story. And some scholars who just apply their mind a little bit and think themselves intelligent, they say, no, this Pacific Ocean, this ocean churning might have taken place in the Pacific Ocean somewhere. And you know what happens when the ocean churning takes place? These 14 jewels, they come out. 14 रत्न मिलते हैं. जब समुद्र मंथन होता है तो उससे 14 रत्न निकलते हैं. And how the Samudra Manthan takes place, how that ocean churning takes place. You know, one side is the Suraj, means the eastern direction, and another side is Asuraj, means western direction. And there is a rope known as Vasuki Nag, and there is a Mathani, that churning port, known as Madarachal. What is that? The name of that Parvat? Sir, Mandar Parvat. Mandar Parvat. It is there. So what all this signify? Let me tell. The Asuras is the eastern direction. Western direction. Suraj is the eastern direction. And this Vasuki Nag is the equatorial region, because the human settlements are around this equatorial region. And Vasuki means Vasana, to settle down. So this equator, and what is happening? The earth is rotating around its axis from west to east with regard to the equator. And this rotation of earth, it is taking place in the space. In Vedas, Samudra means Antariksham. Samudram Antariksham. So this earth's rotation from west to east in the space, this is ocean churning, and it is taking place daily, not some lakhs or 2,000 years ago, 100,000 years ago. This ocean churning is taking place daily. And because this whole space, Antariksha, is the Samudra. There is a scholar called Yaskar. He has written a book, Nirukta. In Nirukta, he has given the words which signify Antariksha or space. So all these words which are now related to the Samudra, ocean, all these words, they signify Antariksha.
in Vedic period. And what happens when this ocean churning takes place? The moon came out. Moon is coming out now. So moon, it will daily come out. Then the Uchaisrava Ghoda, that the horse comes out. What is that Uchaisrava Ghoda? That horse is the sun. Because in Ashwa, in Vedas, the sun, Ashwa has been equated. Ashwa has been described, the sun has been described as Ashwa, because the Ashwamedh Yaj is taking place daily. This Ashwamedh Yaj is purification of the whole solar system by the sun rays. That is Ashwamedh Yaj. So Ashwa comes out, Uchaisrava Ghoda. Then Lakshmi comes out. Lakshmi is the dawn period. This Lakshmi is the dawn period. It comes out. Then what happens? The poison comes out. What is poison? Brahman Granthas says that this darkness is the poison. And who is going to sustain or engulf that poison? Shiva. Who is Shiva? The rising sun is known as Agni, and setting sun is known as Shiva. The setting sun that takes over that darkness. So this is how the whole, all the 14 elements. Then Airavat elephant is there. What is that Airavat elephant? This galaxy, our Milky Way galaxy, is the Airavat elephant. So all these things, either Ashwini Bhai is just showing this World Vedic calendar we publish. So all these things, this galaxy and the stories in Puranas, either they have scientific values behind them. There is nothing unscientific in our tradition, in our festivals, in our parvas, in whatever we do. But the need is to discover this science behind all these things. And that is why we organized purposefully this seminar on Sanskāras, so that we can understand the science behind this whole system that was developed in ancient India. ये सारे प्राचीन भारत में जितना भी ये सब कर्म कांड और ये सब जो डेवलप हुआ है ना, इसके पीछे एक विज्ञान है. उस विज्ञान की हम व्याख्या करना चाहते हैं और विद्वानों से सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि हर विद्वान का कोई ना कोई maybe he might have discovered certain things. So it's a sharing process. हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप हमें शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया है. तो मैं आप सब विद्वानों का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं. और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, we have some more persons that raise their hands. Yeah. Everybody is free to ask any question. The next is Part Sarti. Yes, myself, please. Yes, Part Sarti ji. Yes. जी. मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करता हूँ. सभी जो यहाँ पर गैलेक्सी है उन सभी को मेरा नमन है. मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, वो नंद कुमार जी से ज्यादा रिलेट करता है. मैं सामान्यतः मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो कि कर्मकांडी है और तमाम चीजों में रहता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो चूड़ा कर्म संस्कार है वो मेल चाइल्ड का ही होता है. इसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि फीमेल का क्यों नहीं होता है. No, actually, no, we have made a wrong tradition ना. इनफैक्ट हमने बताया था कल भी ना, हमने कल भी बताया था कि जो चाइल्ड है वो चाइल्ड है, वहां मेल और फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं. इवन की पुंस वन में भी वो दोनों के लिए जो पुमान शब्द है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आया है. अब ये हमारी मान्यताओं में हमने इसको छोड़ दिया है. तो अगर आप जो चीज हेल्दी है, साइंटिफिक है, और वो मेल चाइल्ड के लिए है, वो फीमेल के लिए भी है. तो ऐसा हमें तो कोई, जैसे हमारी स्मृतियां हैं या गृह सूत्र हैं, तो इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो देखा नहीं. मोस्टली तो वही है, किताबों में नहीं, लेकिन व्यवहार में है. व्यवहार में अब कई बार चीज है ना, कुछ व्यवहार में अब जैसे पुत्र को ज्यादा मान्यता दी गई, तो उस चीजें हमने पुत्र बेस्ड कर दिया है सारे सिस्टम को ना. तभी तो हमारी सरकार को ये रूल निकालना पड़ा कि भाई जो वो हत्या करेगा, भ्रूण हत्या करेगा, उसको जेल करेंगे. तो बिकॉज सम डिफेक्ट इज देयर इन द सोसाइटी. कुछ दोष भी आते हैं, कुछ अच्छाइयां भी आती है. तो ये इतनी जो लंबी परंपरा है,
इसमें हम कुछ बुराइयां भी लेके आए हैं और कुछ अच्छाइयां भी लेके आए हैं। तो बुराइयां ये है कि जिनको अब हम दूर करेंगे, अच्छाइयां ये है कि हम जागृत हो रहे हैं अपने अपने जड़ों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में हम ज्यादा ही ज्यादा जानना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। If you have any idea or if you have come across anything that the Mundan Sanskar is to be done with the male child only and not with the female child, have you come across during your studies this type of thing? Well, it is for both sexes. I think Yeah. they do no discrimination. सर एक जिज्ञासा है मेरी। जी जी सर जब फेरे होते हैं, लेट मी टॉक इन अ वेरी लोकल टर्म, जब शादी होती है, फेरे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुरोहित 7 की बजाय 4 फेरे करवाते हैं। वो गलत करवाता है जी। सप्तपदी का विधान है, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि इन्हीं में सारे 7 आ जाते हैं। बिकॉज रिसेंटली आई हैव सीन इट एट प्लेसेस। वैसे तो ऋग्वेद का एक मंत्र है, हस्तम ते गृभणामि सुमंगलीरियम, मतलब उसमें तो ये कहता है वो उसका हाथ भी पकड़ ले, अगर दोनों का हाथ भी मिला दे और मंत्र बोल दिया तो शादी हो जाएगी। वो तो शॉर्टेस्ट पीरियड सिस्टम है। ये तो the ritual of सप्तपदी and there is no such ritual of चतुर्पदी का, कोई चतुष्पदी का ऐसा कुछ है नहीं विधान। क्योंकि मैंने जो है उनसे पूछा भी था, जहाँ मैंने देखा ये कि जी 7 का विधान है जो हमने सुना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब ऐसा है कि 4 में सारे आ जाते हैं, तो 7 का सारे करने की जरूरत नहीं होती। तो आई वाज रियली परप्लेक्स्ड। एक में भी सब आ जाता है, एक ब्रह्म में ही सारा ब्रह्मांड है जी। वो तो आप क्या करें, जी 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 जी। परंतु जो शास्त्र, शास्त्र को हम बदल नहीं सकते, हम तो शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो उसका अपना मत हो सकता है। परंतु हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारा शास्त्रीय सिस्टम है वो बड़ा साइंटिफिक बेस्ड है। Our next person that on the list here is Pandit Bharat Singh from New York. Yes, Bharat Singh ji. Yeah, Professor Ji, thank you very much. I just want to make one, just a simple question here. You know, the Saptapadi, but then you have the 4 bhavar, right? That's 2 separate things, right? Do alag cheeze hai. Yeah. No, Yajakun pradakshana, when they go around 4 times, sometimes they have them go around, in certain culture, not certain culture, but I understand in certain parts of India, they do what we call the Sata Bhavar. But I've seen they do 4 Bhavar, 4 Bhavar. But what I'm asking, the 4 Bhavar and the Saptapadi, that's 2 separate items. 2 separate, no doubt. Because there is a provision of Saptapadi, and if you are having 4 bhavas, so that is different. But we don't find mention of 4 bhavas. At least I could not find in any shastric texts. Okay. No, because I mean the Sanskāra Vidhi, I mean the one I have, I mean the one done by the Arya Pratnidhi Sabha of India, the one from Delhi, says that. But anyhow, I follow. But come back to the Saptapadi. It says they move towards the northeastern direction. Mm-hmm. Is there a reason why they move towards the northeastern direction? No, actually, just like the Earth moves, Earth rotates from east to west. No, west to east. The same direction you will have to apply. You will have to go by the cosmic system. You cannot adopt any other wrong system. Okay. And one other comment here. Sorry. Our head is the North Pole and our legs are the South Pole. So alignment of the poles has to be done. Okay. One important thing we need to remember here also, the reason why, I mean, yes, it has the 7, as you just mentioned in that in the lecture, but one of the important things, the symbolism behind the Saptapadi, it signifies constant motion. A lot of marital couples, we have seen this, Professor G. I mean, I've been practicing well over 20 years here in New York. After 4 or 5 years, the couples sometimes become stagnant. They become थोड़ा सा आलसी है ना, थोड़ा सा lazy.
and they don't want to come to Mandir, they don't want to be part of satsang. So the symbolism here is constant motion, no stagnation must there be in their marital life, meaning doing things together, always making an effort to have progress. And that's very important, that the marital, we tell them that they need to be aware of that. So thank you. Because in Veda says, Charai Vaiti, keep on moving, Charan Vais Labate Swadu Udumbaram. When you will keep on moving, you will have sweet fruits and so many new things, new knowledge. And if you will become stagnant, then you will. That's a Ved mantra? Huh? A Ved mantra you're quoting there? Yeah, yes, in Satpadapi Brahman. Oh, Satpadapi Brahman, okay. Karan, there's a full mantra. Kali Shayano Bhavati, Sanjihanastu Dwaparaha, Tishtan Treta Bhavati. Like that. If you are sleeping, it means you are in Kali Yuga. If you have if you have risen from the sleep, that is just like Treta, Dwapara. And if you have stood up, that is Treta. And if you have started walking, that is Satya Yuga. So keep on walking. So that's a different. So अभी यहाँ पर एक प्रश्न था, ये राकेश हैं, इन्होंने कहा कि राजस्थान में 3 कदम वो महिला आगे रहती है और 4 कदम पुरुष आगे रहता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आगे पीछे आप जैसे चाहे उसको मैनेज करें, कोई भी साथ साथ। कुछ लोग तो वैसे विधान तो है दोनों साथ साथ चले, आगे पीछे का नहीं है, वैसे वॉक है, साथ साथ वॉक है। तो शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 राउंड लगाना है, वो तो सप्तपदी का विधान है, वो लोगों की अपनी अपनी व्याख्या है। आप किसी को 4 कदम, किसी को 3 कदम, वो जैसे आप चाहे वैसे करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, विवाह के पूर्व जो हल्दी लगाई जाती है, क्या उसके भी संस्कार में कुछ प्रावधान, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, विवाह ये भी एक सिंबोलिज्म है, इसका भी कुछ महत्व है। हल्दी जो है ना, 3 चीजें ऐसी हैं, जैसे हल्दी है, नमक है, नमक जिसको वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करने वाला। हल्दी का अभिप्राय ये है कि भाई, जब एक शतपथ ब्राह्मण में बहुत अच्छी एक व्याख्या है, वो मैं यहाँ इतना लंबा कह नहीं सकता, वो यही कहता है कि जब इन दोनों का विवाह होगा ना, तो उनको कुछ उसमें सिंबॉलिक रूप में कुछ बर्तन और ये दिए जाते हैं कि भी ये आपस में रहेंगे। वो हल्दी लगाने का मतलब है कि आप मिलके गृहस्थ चलाएंगे, भोजन करेंगे। और भोजन में हमारे यहाँ व्यवस्था है, जब आप कुछ भी बनाएंगे ना, हल्दी जरूर डालेंगे आप सब्जी में, वेस्ट में नहीं डालते हैं। और वो हल्दी इसलिए डालते हैं कि उसमें वात, पित्त और तीनों जो दोष हैं उनका समन भी होता है, और हल्दी एंटीसेप्टिक भी है। तो भोजन को हेल्दी बनाने के लिए और उसमें मेडिसिनल वैल्यू लाने के लिए हल्दी का प्रयोग होता है। तो वो हल्दी इसलिए लगाते हैं कि जब आपको इसमें इकट्ठे रहना है और एक्सटर्नल एंटीबायोटिक सेपरेट जो बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुद्धिकरण शरीर के कह सकते हैं, शुद्धिकरण शरीर का। शुद्धिकरण भी है ना, शादी से पहले आपका शुद्धिकरण, जैसे देव शर्मा जी कल बता रहे थे कि पूरा जी अंदर से भी बाहर से भी, तो वो प्यूरिफिकेशन का भी प्रतीक है। दीज आर द सिंबल। सर एक और क्वेश्चन है कि विवाह से पूर्व जो कुंडली मिलान होता है, उसमें होता है कि मांगलिक और अमांगलिक, मांगलिक दोष है तो शादी मांगलिक किसी से नहीं होती है, तो उसमें क्या सर, उसमें क्या साइंटिफिक रीजन है? ऐसा वो एस्ट्रोलॉजी का है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि उसमें मांगलिक कुछ सर्टेन उस सिचुएशंस में व्यक्ति मांगलिक बन जाता है, सर्टेन में नहीं बनता है। परंतु देखिए, वेस्ट में तो वो मिलाते नहीं है, उनको तो पता नहीं कौन सा मांगलिक है कौन अमांगलिक है। तो दूसरे आपके विश्वास पे बहुत चीजें डिपेंड करते हैं। वो एक संस्कृत का एक श्लोक है, वैद्य में, औषधि में, गुरु में यस्य भावना यादृशी सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे भैषज्ये च गुरावपि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, वो लिखा है। तो क्या है कि आपका जो भाव है ना, वो मैटर करता है। अगर आप आपका भाव
भावना में आप कमजोर पड़ जाएंगे, अब नहीं ये मेरे को गड़बड़ हो सकता है, तो आपको सचमुच होगा। और जो स्ट्रॉन्ग विल्ड व्यक्ति है ना, मैं आपको बता दूं एक सिद्धांत है, जो स्ट्रॉन्ग विल्ड व्यक्ति है उसको दुनिया की कोई चीज प्रभावित नहीं करती, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो आपकी भावना है, आप स्ट्रॉन्ग भावना रखें, अगर आप उस विचार से घबरा जाएंगे तो वो आपको हो सकता है प्रभावित भी करे, और नहीं तो कोई नहीं करेगा। बाकी देखिए वो एस्ट्रोलॉजी का एक सिस्टम है, आप अपने आप को उसके अनुसार चलाएं, अगर आप उसको मानते हैं तो उसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। सब लोगों ने एक अपना रास्ता भी बताया, ऐसा नहीं फंसा के नहीं खड़ा किया, सबने रास्ते भी बताए हैं, अब ये कर लीजिए ये कर लीजिए। तो जैसे लोगों ने रिसर्च किया है, क्योंकि इस पे और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, हमने तो ऐसा कुछ इस पे वो किया नहीं। We have five more बहुत बच्चे persons बड़े हो that जाते raised their हैं hands. घर में। जी जी पूछिए। The next one is Yadu जी Mohari. प्रतिभा कटारिया जी पूछना चाहती हैं, पूछिए जी। मैं कह रही हूँ कुंडली के चक्कर में बच्चे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, क्या ये ठीक है क्या? नहीं कोई ठीक नहीं है। आप देखिए सबसे पहले कहता है ना, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम धनम, जिनके संस्कार जिनके विचार जिनकी मान्यताएं मिलते हैं, तयोरेव मैत्री विवाह, उन्हीं में मैत्री और विवाह होना चाहिए। नहीं ये आपकी सिंपल कुंडली है, और वो टेक्निकल कुंडली आप जो भी बनाए उसमें चले, ये तो वही ना मान्यता की बात। हमको विचार कुंडली मिलानी चाहिए, विचार कुंडली, ना कि जन्म हाँ कुंडली। विचार की कुंडली, और देव शर्मा जी ने तो कल बहुत अच्छी बातें बताई थी जी। इसके बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें देखिए, उसमें आपको जब प्रॉब्लम है तो आप दूसरा रास्ता अपना लीजिए। अब उसमें तो गण भी है, भाई इतने गण मिले इतने मिले, वो भी एक सिस्टम डेवलप हुआ है, आप उसके अनुसार देखिए। वो तो आपकी मान्यता पे है। जी Okay, next is Yadu Mohari. यदु जी। यस नमस्ते नमस्ते, मैं एरिजोना से बात कर रहा हूँ। यस I thoroughly enjoyed your talk and your thanks for sharing your thoughts. I had also thought about the question that was asked earlier regarding the 4 and the 7, because Chatwari Vak Parimita. If we have Chatwari, Vak is only one, out of the 4th one is only Manusha Vadanti. And all the thoughts are expressed through Vak, and as you have properly connected with all the chandas, so chandas are necessary for proper communication, because Yes. as we all know, most problems occur due to miscommunication. This is especially concerned with the as far as the earthly life is concerned. Saptavak are necessary for effective communication, therefore must be followed properly, because after all, jnatartho jnata sambandha shotu shrota pravartate has to be understood and practiced, and thus extremely critical. That is what I would like to have as a comment. And again, I would really appreciate receiving your slides. Thank you. Thank you. Actually, this Chatwari Vak Parimetaha Padani, that is in another context, that is in the context of speech itself. And Sapta Vak, Sapta is a Pada, that is a different context. So every human beings, there are 4 types of Vaks, whatever you think, because everything in Brahman also, in the context of Brahman also, the Ikshana is there, Ikshana. So Akamayat, so Sankalpatiya, Bahusham, even this Ikshan is there in our body also. First of all, we will have to think, and this thinking process, it makes a blueprint of the things. Then the that is known as Madhyama. There are 4 types of Vaks. Pashanti, Pashanti, Para, Pashanti, Apara, 2 types. And in Apara system, there are 3 types of Vak. Pashanti, Madhyama, and Vaikhri. So Pashanti means Ikshan. You will think about. If you want to do certain things, you will have to make a blueprint of that things. And that blueprint becomes or is formulated in your mind. That is Pashanti Vak. Then what happens? Madhyama. After that, some activity takes place. That is Madhyama. And Vaikhri means its external swarup. It comes
the things are formalized by you. So that is Vaikari Vak. Or if you particularly confine it to your Vak level, then whatever, first of all, we will think. Then the air from our this Shepda, it goes out from lungs. It goes out and it comes in the mouth. Then it strikes to the various places in the mouth, and then the sound is generated. So this whole thing is Pashanti, Madhyama, and Vaikari. This Vaikari is the sound, and Appara is the sound of the yogis. So they talk to the bird while in samadhi. Just like Swami Dayananda, while he was dying, he was just smiling and he was saying, "This is your will, this is your will. Oh God, let it be fulfilled." So that smiling, when a yogi smiles, he talks to the Brahman. That Vak is known as Paravak. Yeah. And finally, as a final thought on this subject, why it was introduced in the marriage, because for marriage to work together, there has to be effective communication. And that communication can only go through Vak, and if proper chandas are used and the other person understands it. If the other person does not understand it, then everything gets to a failure. And that is my final thought. I really appreciated your thought. Thank you. Thank you. Yes. Next is Dr. Dev Sharma, Vidyalankar. Dev Sharma ji. I think he wants to make some comments. Dev Sharma ji, yes. जी, जो ये अभी सतपदी पर आपने बहुत सुंदर जो एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, और जो हमारे यहाँ लाजा होम विधि है जिसमें 4 परिक्रमा होती है अग्नि की, तो जो लाजा होम है वो अलग विधि है, सतपदी वो अलग विधि है जिसमें 7 कदम चलते हैं, और जहां पर ये भी व्याख्या की जाती है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। आपने जो व्याख्या की है वो भी बहुत प्रचलित है, लेकिन साथ साथ ये भी है, और साथ ही जो स्टेप होता है उसमें सखे सब पदी भव, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, पर जब 2 बातें आती हैं कि भाई परिक्रमा भी है, लाजा होम विधि भी है और एक सतपदी भी है, तो वो लाजा होम विधि 4 पद वाली है। ठीक है, आपने और क्लैरिफाई किया। तो जो 4 कदम चलाते हैं वो लाजा होम विधि करते होंगे। हाँ जी। और सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रतिभा जी ने पूछा अभी कि ठीक है ज्योतिष का अपना एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन जैसे वो कुंडली मिलाते हैं वो लोगों को ये नहीं बताते हैं कि कौन कौन से उनके गुण मिले हैं। जी। वो एक कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अब उनको सामने आना चाहिए। ये प्रतिभा जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी मैरिज नहीं होती, किसी को मंगली बता दिया, किसी को कार सर्प योग बता दिया, किसी को कुछ, मतलब मैच मिलता ही नहीं है। और पढ़े लिखे लोग मैच क्यों नहीं मिलता सर, प्रैक्टिकल मैच क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार करें, बच्चों को दे दे, दोनों को पता चल जाएगा कि मैच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं, अभी इसके बारे में मैच मेकिंग पे मैं और बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंट हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। हर व्यक्ति का ओरा है, हर व्यक्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। इवन कि जो आप भोजन करते हैं ना, आप गेहूं चावल, उसका भी अपना एक ओरा है। तो वो जो ओरा है, कई बार वो ओरा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ओरा से मैच नहीं करता है, और उसको आजकल बोलते हैं कि केमिस्ट्री नहीं मिलती है। तो उस ओरा से भी हम पता कर सकते हैं कि आपके लिए ये कौन सा भोजन आपके लिए उपयोगी है और किन व्यक्तियों का सानिध्य आपके लिए उपयोगी है। ऐसे स्थिति रिसर्च चल रही है, तो वो कुंडली सिस्टम से ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। एक सेमिनार रिक्वायर्ड है सर इस विषय पर भी। हाँ, मैं करवा दूंगा, मेरे पास एक मित्र है वो करेंगे, और वो बहुत ही अच्छा है। उसको आजकल किरलियन फोटोग्राफी भी बोलते हैं। जी। और वो ये चरक में भी आया है, वो केवल नया नहीं है, ये चरक में है कि जब व्यक्ति का ओरा आप देखते हैं ना, जैसे महापुरुषों के आपके सिर के पीछे वो लगाते ग्लो दिखाते हैं, वो ओरा है। और उस ओरा का जैसा कलर होता है वैसा ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, उसका हेल्थ, उसका बल, सब उससे निर्धारित हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा इशू है, और जिस पे मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ।
तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं। जैसे आजकल एलर्जिक है ना व्यक्ति, वो डॉक्टर बताता है इंजेक्शन लगा लगा के आप इससे एलर्जिक है, वो ओरा सिस्टम से उस अनाज का और आपका लगाने से पता लग जाएगा आपको, आपके लिए क्या समीचीन है, उपयुक्त है। ये भी प्राचीन काल में देखिए ऋषि तो वैसे ही देख लेते थे ओरा, और जो प्रकांड वैद्य होता था ना वो तो आपकी शक्ल देख के ओरा पहचान लेता था, बता देता था। परंतु आजकल फोटोग्राफी से संभव है, उस पे काम हो रहा है, उस पे भी एक लेक्चर करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो रवि प्रकाश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी जी कहिए। आई वॉज कनेक्टेड टू रशियन एकेडमीज ऑफ साइंसेस, जिन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट एकेडमीज ऑफ साइंसेस मॉस्को ने कुछ काम किया था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1993। उन्होंने जो बॉडी से एमिनेशंस निकल रही हैं, उन एमिनेशंस को बयान किया है। वो है इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशंस, उसमें इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस, मैग्नेटिक रेडिएशंस, केमिल्यूमिनेसेंस एटसेट्रा। तो अलग अलग जगह से सारी बॉडी से रेडिएशंस निकल रही हैं। इट इज मच बियॉन्ड दैट क्रिलियन फोटोग्राफी से कहीं आगे का काम है जी। इसी को चरक में ना प्रभा मंडल कहा है, प्रभा मंडल। हाँ जी, उस प्रभा मंडल में जो उन्होंने वो सारी, जैसे उसमें रेडियो थर्मल रेडिएशंस हैं, आप उसके द्वारा टेलीपैथी भी कर सकते हैं। जी जी। तो वो जो रेडिएशंस आपसे निकल रही हैं, आप अपनी अटेंशन के द्वारा, अपनी मेडिटेशन के द्वारा उनको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, आप जितना मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो लोग चक्र वगैरह की बात करते हैं, आपके सब चक्र ठीक रहेंगे। और ब्रह्म वर्चस्व होता है, जो आपका प्रभा मंडल है, जितना आप स्वाध्याय और ये करते हैं, आपका प्रभा मंडल उतना ही बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जी। और उसके बारे में कहा जाता था, ये जो अपने बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता था कि उनका प्रभा मंडल शायद आधे 1 किलोमीटर तक फैलता था। और आप देखिए जिसका, जैसे योगी का प्रभामंडल है ना, बहुत लंबी एरिया में जाएगा, और उसके सानिध्य में जो भी व्यक्ति आएगा ना या पशु आएगा, उसको वो सरल स्वभाव का हो जाएगा, योगी जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो प्रभामंडल प्रभावित करता है। उससे जो केमिकल और जो सिस्टम निकलता है, ओरा जो निकलता है, वो दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए महापुरुषों के पास जब व्यक्ति बैठते हैं तो वो उनको बड़ा आनंद की अनुभूति, अच्छी वाइब्स उनको मिलती है, तो उसका एक बड़ा प्रभाव है। इसलिए कहा ना, सत्संगति होनी चाहिए, श्रेष्ठों की संगति। वो इसलिए वो आपको मानसिक रूप से, फिजिकली और आपके ओरा को वो एक सुंदर आपको बना देता है। तो रवि प्रकाश जी, इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक यूनिट था मॉस्को एम्बेसी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसलर थे जी। तो उन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें वहां से लेके आए थे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवेलेबल भी होंगी जी। तो हम चाहेंगे कि हम उनसे भी संपर्क स्थापित करें आप, ताकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा विषय है और व्यक्ति के हेल्थ से और उसकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। जी बहुत जुड़ा है, बहुत जुड़ा है। और उसमें उन्होंने उस पर काम किया था जी, जिसको उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म करके बयान किया था। जी जी जी। कि आप अपने ही द्वारा अपनी जो अलग अलग एमिनेशंस बॉडी से निकल रही हैं उनको आप खुद मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उनका जो साइंटिफिक विषय था उसको देखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ेंगे आपकी चेयर के माध्यम से, तो बहुत अच्छा कार्य होगा जी। नहीं ठीक बात है जी, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं ये सब डेवलप होना चाहिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। और क्योंकि जो आधुनिक उपकरण है और आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो इसको और भी अच्छा आगे बढ़ा सकता है। जी बोलिए, और भी कोई लोग हैं? Next मेरा is, एक प्रश्न, मेरा एक प्रश्न। we'll have to take just a minute, madam. आपके प्रश्न लेंगे, आप आराम से पूछिएगा। जी जी। Pratibha ji, please put up your hand. And we have Rakesh Ramawat who has been waiting a long time. ओके राकेश जी बोलिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ विपिन जी बैठे। टॉपिक तो आपका कुछ था, लेकिन आपका ज्ञान सभी क्षेत्रों में इतना ज्यादा है, I was impressed. I just wanted, though it was not related to your main topic, जो आपने एस्ट्रोनॉमी पे जो बताया था कि उत्तरायण और दक्षिणायन, कन्वेंशनली कहते हैं मकर संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होता है,
जी, वो 21 दिसंबर को ही मकर संक्रांति आती है एक्चुअल। ये 14 फरवरी की मैंने बताया था ना, ये 1700 साल पहले थी, 14 जनवरी की। इसको बोलते हैं निरयन, निरयन 0 डिग्री मान के चलते हैं, परंतु अभी जो है वो अयन गति 23.5 डिग्री पीछे चला गया। तो इसको साइंटिफिकली ठीक करने के लिए कुछ करेक्शन होनी चाहिए क्या? बिकॉज लॉजिकली उत्तरायण तो मतलब विंटर सॉलिस्टिस पे होता है। हाँ जी, विंटर सोल्स्टिस भी 21 दिसंबर को ही होता है, और हमारे जो पंचांगों में बताया भी है, वो कहते हैं इतना सायन है, इतना निरयन, वो सारे निरयन गणना पर आधारित है। निरयन का मतलब है आप जहां पर जो प्रिसीजन है, गति बोलते हैं, 0 डिग्री मान के चलते हैं, उस 0 डिग्री से वो कैलेंडर बनाते हैं। अगर आप प्रिसीजन बेस्ड बनाएंगे तो उसको सायन गणना कहते हैं, और वो जो है आपको जो महीने हैं आपके, जो ये है वसंत संपात है, राशियां हैं, उससे बदल जाएगी। जो हमारा कैलेंडर है वर्ल्ड वैदिक कैलेंडर, वो सायन कैलेंडर है, उसमें एग्जैक्ट जो समय जो संक्रांति है वो हम उसमें बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने मकर संक्रांति पे स्नान किया, उसका कोई महत्व नहीं, और आपने 14 जनवरी को किया, उसका तो स्वाद तो मकर है ही नहीं सब। ये है, अगर कोई ब्रह्मांडीय पिंडों का और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का कोई हमारे प्रभाव है, तो वो जो अप टू डेट उनकी पोजीशन है ना, उसका प्रभाव है, बैक पोजीशन का नहीं है। हम उसको बोलते हैं वो हिस्टोरिकल मकर संक्रांति है, ये एस्ट्रोनॉमिकल है जो 21 दिसंबर को। Next on our list, Satish Bihari ji from Mauritius. Ji, Satish ji. Yes. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, Professor Dr. Ravi Prakash ji and all the learned scholars who addressed the floor today. It has been a really impressive session today, and I'm so proud. The session was so interesting that when I was listening to these expose, I felt as if these words are from God directly. लग रहा था कि आप लोग ईश्वर की वाणी को बांट रहे हैं, क्योंकि वेद की वाणी जो की है ना, ईश्वर की वाणी बोली जाती है। और उसको जब सुन करके मुझे इतना आनंद हुआ कि आप लोगों को मैं बहुत ही हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूं। और जब आप लोगों को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ईश्वर मेरे कानों में कुछ बोल रहे हैं, और एक ही पंक्ति मुझे याद आ रहा था, मुझे लगता है कि सभी लोग इसको जानते हैं, वेद की वाणी, वेद की वाणी ये वाणी है भगवान की, इससे मिलती है सामग्री जीवन की कल्याण की, वेद की वाणी। I am so thankful to you all, Professor Ravi Prakash ji, Ken Norman ji, Dr. Narendra Kumar ji. I present my sincere apologies for having missed the 2 previous sessions, and I make it a must to join you every day until the last. Thank you so much for enlightening us all, and keep on the good work that you are carrying on. I thank Dr. Professor Ravi Prakash ji, Bhai Ashwini ji, Bhai Ken Norman ji, Dr. Narendra ji, and all those who are familiar to me. I am from Mauritius. Thank you so much. Thank you, Satish. We have Bharat Bhushan Arya has raised his hand. जी, मेरा रवि प्रकाश जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने कहीं सुना है कि 72 वर्ष में जो मकर संक्रांति है वो आगे चली जाती है 1 दिन के लिए। क्या ये उसका ही परिणाम तो नहीं है जो 21 दिसंबर? और मैं आपको बताता हूं, जैसे पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तो उसका एक और रोटेशन वो है, गति है, और वो है वोबलिंग। जैसे जब आप लट्टू को घुमाएंगे ना, वो वोबल करता है। पृथ्वी 5 प्रकार से घूमती है। हाँ, तो वो जो वोबलिंग है, वो वोबलिंग से उस पृथ्वी के जो आपके इक्विनॉक्सिस हैं वो बदल जाते हैं। वर्ष में 1 डिग्री पीछे पीछे सरकता है, उसके कारण ये परिवर्तन आता है।
तो जो आपका 0 डिग्री पे था तो वो प्रिसीजन होते होते अभी आप, और वो जब पूरा 360 का प्रिसीजन होगा तो आप समझिए 25,920 वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए हम इसलिए हिस्टोरिकली बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए किसी पुराण में लिखा या किसी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा या वेद में लिखा कि मूल नक्षत्र जो आपका वर्नल इक्विनॉक्स है, वसंत संपात है, फला नक्षत्र में होता है और वो आज मूल नक्षत्र में होता है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं कि ये घटना कम से कम इतने हजार वर्ष पुरानी है। तो उसका हिस्टोरिकली बड़ा महत्व है। तो जो मेरी जो पुस्तक है इंडियन क्रोनोलॉजी टू इंडियन हिस्ट्री, मैंने पूरे हिस्ट्री की जो व्याख्या है उसकी जो क्रोनोलॉजी दी है इसी सिस्टम का उसमें बहुत प्रयोग किया है। ये बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद जी। सर मेरे एक बहुत छोटा सवाल है लेकिन है महत्वपूर्ण। जब शादियां रात को हुआ करती थी तो जो है सप्तपदी भी होती थी, वामांगी भी हो जाते थे और उसके बाद जो है ध्रुव दर्शन होता था। आजकल तो विवाह दिन में होते हैं, तो फिर ध्रुव दर्शन कहाँ से होगा? ऐसा जी, आजकल हमारे यहाँ तो विवाह आजकल रात को होने लग गए। हमारे यहाँ तो ये नॉर्थ में, मैं तो रोहतक में हूँ, यहाँ तो सब रात में ही करने लग गए हैं। नहीं, यहाँ मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर। ध्रुव दर्शन भी सिंबॉलिक है जी, वो भी एक सिंबॉलिक है कि भाई स्थिर रहना आपको। ये जो आपका गृहस्थ आश्रम है इसमें ध्रुव जैसी स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे वो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो छोड़ देते हैं और दूसरा तीसरा चौथा चलता है, वो नहीं है। स्थिरता जो अब जीवन में अगर आप स्थिर नहीं है, अपने गृहस्थ जीवन में स्थिर नहीं है, तो आप जो ये जो अस्थिरता है ना, ये आपके पूरे जीवन को, आपके सिस्टम को अस्थिर कर देगी और फिर आपको दूसरा मनुष्य जीवन भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वैदिक मान्यताओं में विवाह जो है वो रात का है, सही है या दिन का? देखिए तो दिन का ही विवाह है वैसे तो, पर जो ध्रुव जो वो है दर्शन है वो तो रात को ही होगा, सायंकाल के समय। आप देखिए ध्रुव की भी सिचुएशन अलग है। आप अमेरिका में तो आपको अलग समय दिखाई देते हैं सारे नक्षत्र, आप नॉर्थ में है तो अलग समय दिखाई देते हैं। I'd just like to add some of the principles that Dr. Ravi Prakash Arya has mentioned in this seminar. Some are explained in this annual World Vedic Calendar. It's available in most countries on the Amazon website. In India, it's available separately, and if you're interested, we can help you to give you the necessary information to get your own copy. Dhanyavad. देव शर्मा जी कुछ फिर कहना चाहते हैं क्या? नहीं जी। अच्छा, नहीं मैंने कहा वो आपका हाथ का निशान है। नहीं। भारत भूषण जी भी ठीक है। अब इसको हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो I thank you all for coming here and making this seminar a success. So everybody is taking part so interestingly that the enthusiasm of scholars or speakers, it has increased. And as Satish ji told from Mauritius, that he is missing the previous 2 sessions. So I think our old sessions, the next 2 sessions will also be as illuminating as these 3 sessions.